addressing mode. What is basically register indirect addressing mode? We have discussed one indirect addressing mode in the initial stage at the third addressing mode. That was indirect addressing mode, that was taking the memory location. Okay, so this is the basic difference between the register indirect addressing mode and simple indirect addressing mode. Let me write here. Okay, so we discussed in the previous slide about the indirect addressing mode. That was indirect addressing mode. See, what is the difference between indirect addressing mode and register indirect addressing mode? In register indirect addressing mode, on the place of memory location, registers are used. That's the only difference. See, the address field of the instruction refers to a CPU register that contains the effective address of the operand. Only one reference to memory is required to fetch the operand. That means what happens in the address field? See, this is the instruction format. Okay, from 0 to 11 it is the address field. Okay, so the address field of the instruction, here on the place of address there will be the address of register, address of register. Okay, but in indirect addressing mode there was X here. X is denoting memory location. So only one reference to memory is required to fetch the operand. The next is example, add R will increment the value stored in the accumulator by the content of memory location specified in register R. That means if we give the instruction, AC is denoting the CPU register. Here it is written refers to a CPU register. Now what is CPU register? AC, accumulator, or you can say processor register. It is called a CPU register. So what is happening here? Add R. If the instruction is add R, okay. See, if the instruction is add R, that means, and the leftmost bit is 1, okay. Leftmost bit is 1. That means it is using the indirect addressing mode. Indirect addressing mode. Now how we come to know about the register? Because here R is written. That's why it is R is denoting the register always. So here we have not specified the register that is storing the content of addition. So we will automatically take AC here. AC is the accumulator. The content of register R. Now why here double square bracket is written? Because it is indirect addressing. Indirect addressing. Okay. So here whatever the content will be stored on register R, that will be added to the content of accumulator and the result will get stored in the accumulator. So what is written here? The addressing mode is similar to indirect addressing mode. The only difference is that the address field of instruction refer to a CPU register on the place of memory location. So this is the only difference between the indirect addressing and register indirect addressing. Okay, in indirect addressing, here you can see that this is the instruction. This is the instruction. Opcode R, it is the instruction format. Okay, now what is opcode here? Opcode, we have discussed one example, that add is the opcode here. And what is R? R is representing the register. So where register is pointing? Register is pointing, here is a register set. Here it is a register set where number of registers are present from R0 to R15. Okay, but we can store the data only in R0 to R12 register. So register is pointing, register in the instruction is pointing to the register in the register set. Now again this register is pointing to the operand that is stored at the memory. Okay, the final operand is present in the memory. That's why R was enclosed in double square brackets. Okay,
R is present at some address. So this square bracket basically represents the address. Square bracket is basically used where the address is to be represented. So R is represented at some address. Now where that address is at memory location. So effective address will be this. This will be the effective address in this. Next is the relative addressing mode. What is relative addressing mode? Effective address of the operand is obtained by adding the content of program counter with the address part of the instruction. Now here what happens? It is a relative addressing mode. What is happening here? The effective address. Okay, the address, effective address is which address? Where actual operand is present. Operand is present. So in relative addressing mode, effective address of the operand is obtained by adding the content of program counter with the address part of the instruction. If the instruction is add A, that means the operand will be found at the location program counter plus A. Okay, wherever A is stored in the memory, that will be A stored at the memory, some memory. Okay, so the program counter content will be added to the memory address. Now here what is written in the memory, you can what is written in diagram. Here it is an instruction that is representing opcode then A. For example, add A is there. A is the memory location here. Okay. So here at the bottom you can see there is a program counter. The content of program counter will be added to the content of A, and after addition, whatever value we will get, at that value the operand will be present in the memory. In this, the addresses are being added. Address of A that is in the instruction plus address that is stored in the that is in program counter, because program counter holds the address of the next instruction. Okay, so effective address जो होगा वो क्या होगा? That will be the addition of A and program counter, and it will go to some address in this memory location, and here the operand is present. So effective address is this here. So program counter always contain the address of the next instruction to be executed. After fetching the address of the instruction, the value of program counter immediately increases. That means when the value of program counter will be added to the value that is stored in the instruction. जब program counter में जो address value थी, जब वो add होगी with the value of A, after that program counter जो होगा वो increment हो जाएगा. जो भी उसमें address आएगा that will get incremented after the addition. The value increases irrespective of whether the fetched instruction has completely executed or not. चाहे जो भी instruction हमने दी है, चाहे वो completely execute हुई है या नहीं हुई, independent of that, जो program counter है, जब उसके content add हो चुके हैं with the address part of the instruction, तो program counter की value automatically it will get incremented. Okay. So next is the indexed addressing mode. What is indexed addressing mode? Effective address. Effective address is the address where actual operand is present. Is obtained by adding the content of index register with the address part of the instruction. अब relative addressing mode में क्या था? जो address part of instruction जो भी था, like A था उसमें भी, ठीक है, that will be added to the content of program counter in the case of relative addressing mode. Okay. But in the case of indexed addressing mode, there will be an index register. Now what is index register? Index register is that register that is holding the address value of all the registers. Okay. Now here you can see this is a register set. This is a register set, like this is a stack where all the registers are present from R0 to R12. Okay. So here index register will be pointing to some register. Okay, whatever address of this register is. Address of register. Okay, that address will be added to the address of the instruction. Okay, now what is happening here in the instruction itself? There is one opcode part, there is one index register, and there is one A.
So the instruction would be like add R A. Okay. So R is the index register here in the register set. That address of the register will be added to the address of the A, address of the A value. Okay. So after get addition of these both values, the final address will be in the memory. Okay. So here operand is present in the memory. This is called the effective address. Okay. So is it clear up to this point? What is base register addressing? बेस रजिस्टर क्या होगा? जो आपका बेस होगा, बेस रजिस्टर जो इस भी रजिस्टर को आप बेस मान के चलोगे. हम कई बार कैलकुलेशन करते हैं ना कि एक हम बेस ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने R0 को बेस ले लिया, एक रजिस्टर को बेस ले लिया, बाकी सारे ऑपरेशन इसको लेके हो रहे हैं फर्दर. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेस रजिस्टर. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? अब प्रीवियस में क्या था? इंडेक्स, जो इंडेक्स एड्रेस था, इंडेक्स रजिस्टर जहां पे भी पड़ा था उसके एड्रेस जो था वो ऐड हो रहा था विद द कंटेंट ऑफ ए. अब यहाँ पे क्या होगा? ऑन द प्लेस ऑफ इंडेक्स रजिस्टर देयर इज अ बेस रजिस्टर. देयर इज अ बेस रजिस्टर. बेस रजिस्टर पॉइंट किसको करेगा? ये सारे रजिस्टर पड़े हैं. रजिस्टर सेट मतलब मेमोरी में कहाँ पे कहीं पे रजिस्टर्स हैं जहाँ पे क्या है, रजिस्टर्स पड़े हैं सारे. मान लो ये रजिस्टर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एज्यूम कर रहे हैं हम. ठीक है. तो base register is pointing to some register here. So this address will be added to the address part of the instruction, and actual address जो होगा, effective address, that will be here in the memory where actual operand is present. Just on the place of index register there is a base register. Okay, this is the only difference between the index register and base register. So next is auto increment. Yes, इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड. अब ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होगा? आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड, दैट मीन्स जब हमने ऑपरेंड की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, उसके बाद जो रजिस्टर के कंटेंट हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएंगे. तो वो इंक्रीमेंटेशन बाय 1 भी हो सकती है, बाय 2 भी हो सकती है. दैट डिपेंड्स अपॉन द गिवन इंस्ट्रक्शन. ओके, सो हियर आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड the content of the register is automatically incremented by step size d. Now what depends upon the size of operand access? जो size d है वो डिपेंड करता है size of operand पे. यूजर डिफाइन नहीं करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑपरेंड जो भी एक्सेस हुआ है अभी. ठीक है, ये हम नेक्स्ट में स्लाइड में एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ आपको. Only one reference to memory is required to fetch the operand. Next here you can see the diagram. ये एक इंस्ट्रक्शन है हमारी जिसमें क्या है, यहाँ पे ऑपकोड है, ऑपकोड. तो सेकंड इज आर ऑटो. आर ऑटो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रजिस्टर ऑटो. मतलब रजिस्टर जब भी हमने ऑपरेंड को एक्सेस कर लिया तो रजिस्टर विल बी ऑटो इंक्रीमेंटेड. ऑटो इंक्रीमेंटेड. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल क्या है? जब आर ऑटो ये किसी रजिस्टर को पॉइंट करेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3300. रजिस्टर के अंदर वैल्यू गिवन है मेमोरी की 3300. तो ये 30 ये यहाँ पे क्या है? रजिस्टर सेट. और ये यहाँ पे क्या है? मेमोरी लोकेशन. तो जब भी आर ऑटो ने पॉइंट किया मेमोरी रजिस्टर की तरफ, तो रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ था 3300. ओके, 3300 मतलब एक ही रेफरेंस ले रहे हैं हम ऑपरेंड को एक्सेस कराने के लिए. तो ये रेफरेंस क्या है? दिस रेफरेंस इज कॉल्ड द 3300 हेयर. तो जब ये 3300 लोकेशन पे गया, वहां पे इसको वैल्यू मिल गई ऑपरेंड की. वो वैल्यू क्या थी? 6b. 6b क्या है? वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. अब b क्या है यहाँ पे? b मीन्स 11. ओके, तो हमने हेक्साडेसिमल में इसको 6b से रिप्रेजेंट किया. सो आर ऑटो का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, जो एड्रेस है रजिस्टर का वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा. कैसे? अब पहले ये वाला रजिस्टर पॉइंट कर रहा था 3300 को. 3300 पे क्या था? 6b एड्रेस, 6b वैल्यू थी ऑपरेंड की. जब ये ऑपरेंड एक्सेस कर लिया गया, उसके बाद यहाँ पे ये इसी लोकेशन पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 3302. 3302. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 से इंक्रीमेंट कर रही है. 3298 है, फिर 3300 है, फिर 3302 है.
तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है इट इज इंक्रीमेंटिंग बाय 2, इंक्रीमेंटिंग बाय 2, जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंटिंग बाय 2 कर रहा है। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे किससे जाएगा, 7F, मतलब यहाँ पे एड्रेस क्या आ जाएगा 3302, तो पॉइंट किसको करेगा ये 3302 को, जहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है 7F। ओके, अगर यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है अगर यहाँ पे 3290 होता, यहाँ पे 3300 होता सेम ही। ओके, तो यहाँ पे 3310 होता। तो ये इंक्रीमेंट कैसे होता, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 10, क्योंकि डिफरेंस कितना है मेमोरी लोकेशंस में, 10 है, 10 का डिफरेंस है एड्रेसेस में। तो ये इंक्रीमेंट हो जाता बाय 10, तो यहाँ पे क्या आ जाता 3310, यहाँ पे क्या होता 3310। मतलब जो क्या करेगा ये, यहाँ पे जब हमने ऑपरेंड को एक्सेस कर लिया तो यही रजिस्टर नेक्स्ट एड्रेस को, मेमोरी में नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। इंक्रीमेंट कितना होगा, जितना उनमें डिफरेंस है। ओके, क्लियर है। अब ऑटो डिक्रीमेंट में आपको यहीं से समझा देती हूँ। ऑटो डिक्रीमेंट में से क्या होगा, वो इसका रिवर्स होगा। अगर 330 पे हमारा 6B है तो सो नेक्स्ट इज हियर रिटन एज्यूम ऑपरेंड साइज इज 2 बाइट्स। ओके, यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑपरेंड साइज कितना है, 2 बाइट्स है, तभी यहाँ पे इन पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स जो ऑपरेंड है उसका साइज कितना है, 2 बाइट्स। देन अब क्या है, आफ्टर फैचिंग द ऑपरेंड 6B द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर R auto will be automatically incremented by 2. Okay, we have seen this by taking the example. Then update value of R auto will be 330 plus 2, क्योंकि D का साइज क्या था वहाँ पे 2। अब नेक्स्ट जो रजिस्टर किसको पॉइंट करेगा, इट विल पॉइंट टू द 3302 मेमोरी लोकेशन। So at memory address 3302 the next operand will be found. In auto increment addressing mode, फर्स्ट द ऑपरेंड वैल्यू इज फेच्ड। फर्स्टली क्या होगा, 6B वैल्यू फैच होगी, उसके बाद 330 क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा बाय 2। तो आफ्टर दैट 3302 विल बी पॉइंटेड टू द ऑपरेंड दैट इज प्रेजेंट एट 3302। सो देन द इंस्ट्रक्शन R auto value is incremented by step size D. So next is auto decrement addressing mode. This is exactly the reverse of auto increment addressing mode. So here you can see that this is the same example. Okay, so here the return is R auto, but R auto means R decrement here. Okay, so it is pointing to some memory location 3302. So here on 3302 the operand 6C is present. After accessing the operand 6C, the value in the register set will become 3300. Okay, so next the pointer will be pointing towards the 330 memory location. Okay, so this was all.